आज 17 दिसंबर 2023 संडे को जो हमारी ये राउंड टेबल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एनवायरनमेंट, ये डॉक्टर KK HCFI हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जो मीटिंग होती है राउंड टेबल एक्सपर्ट ग्रुप एनवायरनमेंट, उसमें हमारे एक्सपर्ट मेंबर्स का और हमारे जो व्यूअर्स डॉक्टर KK अग्रवाल के जी के यूट्यूब फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन सबका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो रिसेंटली कंक्लूडेड जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई दुबई में, उससे आउटकम पे रिलेटेड है। हमने पिछले 1-2 सेशन इस पे किए हुए हैं, जब ये COP28 का स्टार्टिंग नहीं हुई थी और मिडिल में भी। बट आज हम डिस्कस करेंगे कि आउटकम्स तो हर कॉन्फ्रेंस में आते रहते, COP28 में ऐसे ही आए हैं, बट इसके वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, आउटकम का क्या इम्पैक्ट होगा, और पहले आउटकम क्या था, ये सब पे बात करेंगे। तो मैं एक समरी से स्टार्ट करूंगा जो इसके आउटकम्स पे, देन हम एक्सपर्ट मेंबर्स को इनवाइट करेंगे। As we all know that the world, this is biggest climate meeting, that is a 28th conference of party, the COP28 of the UN Framework Convention on Climate Change, was held in the Dubai, UAE, which is started from the 30th November 2023, and this is ended in the 13th December 2023, just 4 days back. The important outcome of this conference, this included, actually, that was the very, I think I can say very good outcomes, I can say that. The first one was the operationalization of the loss and damage fund, which was established during the COP27 in 2022. And this is very good that this is a decision has been taken for this operationalization of this fund. This fund initially will be, this is hosted by the World Bank, and about US dollar 700 millions were the received from the in this particularly the fund. So this is very good. I mean, this is for the countries, developing countries, who are vulnerable countries, and they're prone to disasters, and this will be very good fund for that. It also, the decision was, it also concluded the first global stock take of the climate action under Paris Agreement. We all know the global stock take is a 2-year review process. This is which review the progress on the mitigation, adaptation, and the climate finance, and also outcome in the way forward. What should be the action taken? This is a kind of review, so that was taken. That the third conclusion is also adopted a decision calling for accelerated short-term action and orderly transition away from fossil fuel. This is very important decision. This is towards the climate neutral energy system. This is the first ever the COP decision to address actually fossil fuel, and this is the major driver of the climate change. The party, based on these three important decisions, recognized that by 2030, global greenhouse gas emissions must be reduced to by 43% below 1990 levels to limit global warming to 1.5 degrees Celsius, and commit to accelerate action in the critical decade. This is the very good party agreed. Party also called upon the contribute to tripling global renewable energy capacity and doubling the global rate of energy efficiency improvement by 2030. So these are very important decisions. Party also must accelerate efforts to net zero emissions energy system and towards the phase down of the unabated coal power. The party must also transition away from the fossil fuel to energy system in a just, orderly, and accelerated manner, accelerating action in this critical decade so as to achieve the net zero by 2050. But India net zero is target is by 2070. This COP28 decisions also highlighted the importance of protecting, this is addressing nature and ecosystem. This is the particularly and enhancing efforts to halt and reverse the deforestation by 2030, and invite parties to process and restore
like oceans and the coastal ecosystem also. So these are very, very important decisions. And Government of India, they also welcomes the decision taken and the final outcome of the COP28, particularly the operationalization of the loss and damage fund, which mean to provide help to the country trying to recover the climate disasters, and particularly in India, so many the climate disasters, including the cyclone and all that. So this is very good India for this loss and damage fund, besides the other decisions. So with this background, I first invite my colleague and friend, Dr. M. Dwarkanath, and who has worked in the both Delhi government and the Puducherry government, and particularly the so many state action plan and climate change. We work together. So, so I'll request Dr. M. Dwarkanath ji sir to about this particular outcome of the COP28 and the India's perspective in this regard. Yeah. Thank you, Dr. Anil. Good afternoon to everyone. And it is really a good beginning. COP28 outcome, I should call it as a good beginning. Any great achievement at a later date should first have a good beginning. Why I am calling it as a good beginning, though the outcome decision and the signatory countries have taken one more extra day in arriving at such a decision, because the OPEC countries and then the Middle East or Gulf countries, they had their own reservation against the word of phasing out of fossil fuels. So that text should not have the phasing out word. That is what the objection of the OPEC countries was there. And then finally we have able to negotiate and have a text which is mutually agreeable to everyone, which is called the beginning of the end of fossil fuel era. That is by laying the ground for a swift, just and equitable transition underpinned by deep emissions cuts and scaled up finance. So this itself in itself is a good achievement in the text, because as Dr. Anil told, in last COP we have agreed upon a concept called loss and damage fund. Whether it is good or bad, or it is enough or it is not enough, at least in this COP28 we have found a 700 million US dollars had been allocated for loss and damage fund. So last time at least we have addressed this loss and damage issue, and it had come in the text of COP. Now in the next COP we are seeing an tangible financial instrument that is available to execute the compensation for loss and damage fund. In the same way, it is a good beginning to make an attempt to phase out, if not phase out, but reduce the fossil fuel consumption, not only by our countries but also by all the signatories of COP28 had agreed upon this. So this is very good, but at the same time my concern lies in the developmental strategies that are going to be adopted in the African continent. Now we are not addressing much about the developmental phase with which Africa is going ahead. In major electronic media, you will be seeing 20 countries of African continent are calling together for global investment. The moment global investment goes, it goes with the profit motivation and also huge energy consumption and also destruction of the timber. These three issues are very crucial when we look at the development of African continent as a whole.
So these are my initial remarks. I now hand over to Dr. Anil. Yeah. Thank you, sir. Definitely will come back to you because your experience definitely in this particularly, because whatever decisions taken in this COP or the earlier COP, I mean the not in totally in toto is the like implemented, and there's so many issues in the implementation issues, and country to country specific issues are there. So I'll come back to you this particular. So I'll request Dr. Saha if you can just unmute, and if you can able to, I don't know, you connected to from the laptop or the mobile, but if you can, Dr. Saha, if you can open and put your specific, I mean, points or remarks on particularly the outcomes of this COP28. Thank you, Nareshji and all. And good afternoon to all. Hope I am audible. Yes, sir, definitely. Actually, I could not participate many of the events. I'm sorry for that. No, sir. And because I was not able to connect through my mobile. I do not know. There is a bank always says your that is a federal installation is there. So I identified it anyway. The thing is that we have started discussing on the COP28. It's a very good initiative, no doubt. But recently I had been to Bombay. Yeah. And I found that the socio-economic condition of the people, nobody is talking those in those terms. And nobody is talking about the cutting the emission and cutting the comfort. To me, as a general public, and citizen of India also, I feel we are not really equitably trying to do everything for all. Cutting the emission is the main issue. First of all, it will reduce the air pollution. Air pollution is a recent threat, and the climate may be the next decade we are going to have the impact of climate change. But the air pollution has a relation with the climate change. There is no doubt, particularly the carbonaceous compound, those who are going to add it into the atmosphere. And entire Bombay, I went there after about 7 or 8 years. And I found that everything is elevated. Roads are elevated, the metros are elevated, and the ground condition is very, very poor. And everywhere there is a smell and smoke, and it is a really unmanaged city now. Really an unmanaged city. And the main source of that is also a coastal city. There is sink, there is source are there. But sink, the sea breach, every 12 hours, it is not able to dilute and disperse the pollutant. Those are being generated within the city. And I found they are trying to make a competition between Delhi or IGP and Mumbai. I do not know what is the condition in other rest of the Maharashtra. But we are not really able to control our emission. This is the main issue. And tonight also, 8 years, 9 years back, we used to hear there are smell of solvents. And as on date also, the same situation is on. I'm not blaming clearly, but the people are not understanding the issues, the VOCs being generated and thrown into the atmosphere at night. And I had the opportunity to discuss with some of the fellows. They are telling the recovery of those solvents are very, very cost. It is not cost effective, and thus we are not doing. Then I told because of the health hazard, this is required to be controlled, and you are going to get back this economy. No, sir, we are really not in a position to control. Now, the thing is that we talk about global, but locally we are not really doing well. This is my observation. Wherever I go, I found what the local people are doing.
what is their message we are able to send, and how we are able to take them on board. These things are missing. If we are not economically, locally sustainable, how we can think of globally sustainable? This is my issue that I wanted. So everything is starting good. Maybe it will end also good. The one of the thing I must appreciate that the phasing out of the fossil fuel-based thermal power plants and adding nuclear power plants is one of the best and good steps so far. And the I had the Anilji, it was a pleasure talking to Director Oswal Saab. He was there in a meeting, in a national conference, and he told I'll share his actually I don't have his presentation, but I have recorded his message, what he wanted to convey. He was also participant on the G20, and he was sitting beside our Prime Minister, Honorable Prime Minister, and said that the benefits of nuclear power, and that's why it has taken into shape that we are going to have nuclear power, and we are going to phase out this coal-based fossil power thermal plants, and also the reduction in the solar power plants. That is also a wonderful step, because we are not so advanced that we can everywhere we can have solar power based, because the waste generated, we don't have the strategy yet what to do. Similarly with the e-vehicles also, that the same thing I used to do. Until and unless we have the adequate reprocessing facility, and if we have the facility, even if we have the facility, we may not get the appropriate land for recovery of the resources that are being dumped into here and there. So looking into this, I found that the CO2 there will be substantial CO2 reduction if we really get into the nuclear power space energy, and this will definitely help in preventing climate change in the globally also. This is the thing just I wanted to add. I am always a critic, and I was also very happy to see YS Maya, who has designed that our smog tower, and he was also very happy to see me, and we had a lot of discussion on these issues. And the people are trying, but the high-end research is not required at this stage. We need to do some work locally. No monitoring measurement, because I went for a national conference where I found the high-end researchers are there, but ground truthing, ground reality is not taken into consideration. I do not know how these research findings is going to help our society. This is a question remain unanswered as on date. Thank you for giving me an opportunity. Thank you, Dr. Saha, for your valuable inputs, valuable the comments. I mean, there's always in the you speak in the reality that was it. So thank you so much. But definitely the talking to global issue, and definitely we have to work in the at local level. And in this regard, I think the mission life, the lifestyle for environment, the particularly the campaign and the started by the government of India, it will help, because it's covering so many, I think 75 different actions, and if it is really in the implemented at the ground level, it will help in the cutting both the emissions on the or also the reducing the air pollution. So I think that will be, and the though we have different impact also in G20 also, we have green development pact and the all, I mean that's what we discussed, but at the local level definitely the kind of the mission like mission life or lifestyle for environment, the issue, because this is related to our traditional lifestyle, so that will help in the, and people must understand, and also these need to be sensitized for these kind of actions. So thank you, Dr. Saha. So
I'll request Sri Gupta ji, Sri S.K. Gupta ji, Shyam Gupta ji, if you can just, because you also always speak at the ground reality and the ground level, what the global conclusion or the outcomes are there, but definitely this impact or this action in the ground level is very important. So over to Shyam Gupta ji. Thank you, Dr. Anil. Thank you very much for giving me an opportunity to share my views. मुझे डॉक्टर साहब कई दफ़ा इन कॉन्फ्रेंसेस के बारे में जब अनाउंसमेंट होते हैं और उसके बाद में हम इसके डिस्कशंस को या आउटकम्स को डिस्कस करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब हम लोगों के ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं। और जो ग्लोब के लीडर्स हैं, वर्ल्ड के लीडर्स अगर एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, तो why are they not talking about the welfare of human beings? Why are they talking about the projects and funding and जिसमें और जैसे अभी द्वारकानाथ जी ने कहा कि भाई अफ्रीका के 40 कंट्रीज हैं या 20 कंट्रीज हैं, वो उनको बोला गया है कि भाई आप अपना एक इन्वेस्टर मीट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इनवाइटिंग इन्वेस्टमेंट फॉर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जब भी जहाँ भी होगा या इंक्रीज होगा या उसको हम डाइवर्सिफाई करेंगे डेवलपमेंट को, तो कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट का डैमेज तो होता ही रहेगा, और एनवायरनमेंट का डैमेज होता रहेगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ रिड्यूस होती जाएगी। और हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को किस तरह से प्रोटेक्ट करके रखें। हमारा एम्फेसिस प्रोटेक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ पे नहीं है, सिर्फ इस पे है कि डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इधर से उधर कर दें, या जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं जो डेवलपमेंट में अपनी लग्जरी या कंफर्ट को कम नहीं करना चाहते, वो पैसा दे के जो गरीब देश हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे कहना चाहते हैं कि तुम शोर मत मचाओ, हम तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे, तुम भी अपने थोड़ा सा बचाव कर लेना। वो अपने कंफर्ट को कम नहीं कर रहे, और जो लोग बहुत लो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एमिशंस में, या उनसे कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हें पैसा दे देते हैं, तुम अपने एमिशन को कंट्रोल कर लो। उससे क्या फर्क पड़ेगा सारे वर्ल्ड के अंदर? नहीं पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपने अभी बात कही मिशन फॉर लाइफ वाली, ये इस तरह के जो स्टेप्स हैं ये रियली इम्पोर्टेंट हैं लोगों की लाइफ में। कि क्या कोई ऐसा, इतने सारे वर्ल्ड के लोग इकट्ठे होते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, COP28 के जैसे प्लेटफॉर्म पे, तो क्या ये लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई हम ऐसा क्या करें जिससे लोगों की लाइफ की लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हो जाए, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए, लोगों में खुशहाली आ जाए। हमें तो कोई ऐसा तरीका नजर नहीं आया कि ऐसा कोई सजेस्ट किया गया हो। तो इतने बड़े बड़े दिमाग लग रहे हैं, लेकिन क्या वो इस दिशा में नहीं सोच रहे? तो ये सोचने के लिए हमारे जैसे छोटे ग्रुप्स को छोड़ दिया जाता है कि तुम सोचो, तुम बताओ, या तुम अपने डिस्कस करते रहो आपस में और बस मजे लेते रहो, अपने समय लगाते रहो, बिजी रहो किसी ना किसी काम में, हमें मत छेड़ो। तो ये मुझे लगता है कि अप्रोच ही थोड़ी मिस गाइडेड सी है या मिसफॉर्म्ड सी है। और जो साहजी ने कहा कि एनवायरनमेंट से लोकल इश्यू ग्लोबल इश्यू नहीं है, हम लोकल लेवल पे टैकल ही नहीं कर रहे अपने एनवायरनमेंट को, लोकल लेवल पे हम एनवायरनमेंट की कंडीशंस को इम्प्रूव ही नहीं कर रहे हैं और सिर्फ बड़ी बड़ी लेवल की बातें कर रहे हैं। उससे तो लोगों की लोकल लेवल पे कंडीशन इम्प्रूव नहीं होंगी। आज इन्होंने बॉम्बे का जिक्र किया, बॉम्बे तो बहुत सालों से ट्रांसफॉर्म हो रहा था, किसी ने, सब लोग देख रहे थे सब, लेकिन सब लोग के फायदे का काम था क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा था, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे थे, बड़े बड़े बांद्रा कुर्ला सी लिंक बन रहे थे और बहुत सारे फ्लाईओवर बन रहे थे, बड़ा हाई लेवल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो मुझे लगता है ये सब हम चीजें किसके लिए कर रहे हैं? तो ये इस पे बहुत एक चिंतन की जरूरत है। और हमारा देश तो भाई बुद्धिस्ट का, बौद्ध का और जैन का और हिंदू धर्म का रहा है, हमने स्पिरिचुअल गाइडेंस दिए सारे वर्ल्ड को। तो इंडिया को इसमें थोड़ी लीड लेनी चाहिए और हमें बताना चाहिए कि भाई व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ लाइफ। हम मतलब ये इस तरह के जो स्ट्रेसफुल लाइफ पैटर्न में फंस गए हैं, उससे निकलने की बहुत सख्त जरूरत है। हम अपने आराम से शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकें, क्या ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता इस तरह के आउटकम्स का? या ऐसा आउटकम, इन आउटकम में मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि हमारे लिए क्या फायदा है इसमें। हम ये सब देख रहे हैं कि हाँ ये बड़े बड़े टारगेट्स फिक्स कर रहे हैं, लेकिन उससे
आम जनता को क्या फायदा होने वाला है ये अपनी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं रियली आई एम वेरी सॉरी कि मैं बहुत इल इक्विप्ड हूँ कमेंट करने के लिए कि इस COP28 के जो आउटकम्स हैं वो कितने फायदेमंद होंगे, कितने हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे। तो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ही है और मुझे बिल्कुल ये लगता है कि ये सब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए होते हैं। थैंक यू। दिखावा करना है बस इंडिया वालों को तो। थैंक यू। Thank you. रिपोर्ट बनानी है, कुछ दिखावा बोले करना है। खंडेलवाल जी, you can I think continue with your comments that was. नहीं, मैं तो शाह साहब से, द्वारकानाथ जी से और सबसे ज्यादा गुप्ता जी से बिल्कुल एग्री करता हूँ। बिल्कुल ये देखना चाहिए कि हम लोग अपने आप में क्या कर रहे हैं। मैं इतने प्लांट लगाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ और मेरे प्लांट नहीं चलते, तो कैसे मैं इसको कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर पाऊंगा। दिल्ली में अभी तक बर्निंग ऑफ गार्बेज रुका नहीं, जो कि मेन सोर्स कहा जाता है। प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट हो नहीं रही है, जो कि मेन सोर्स कहा जाता है। वही सही बात है, जैसे गुप्ता जी ने कहा कि इतने बड़े बड़े प्लांट लगा दिए। मैंने भी बहुत प्लांट लगा दिए। मेरे प्लांटों की पोजीशन क्या है? रिपोर्ट में हम जरूर दे देते हैं मेरे इतने प्लांट लगा दिए, इतना प्रोसेस कर दिया, इतना वो कर दिया। अब तो डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर नहीं हो रहा है। अगर आप डीपीसीसी की साइट पे जाके देखें, जो एक्चुअल डाटा है वो है ही नहीं वहां पे। मतलब एक तरफ वो देते हैं कि मैंने इतनी सैंक्शन दे दी है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मेरी प्रोसेसिंग कैपेसिटी केवल इतनी है। मतलब वो भी मिसमैच हो रही है। तो अब किस चीज पे वो करोगे? लोकली आप किसी भी एरिया में जाके आप देख लो, चाहे वो व्हीकल के में देख लो, चाहे रोड सेक्टर में देख लो। अभी मैं कहाँ, वहाँ गैंगटॉक गया था। बाल डोगरा से गैंगटॉक तक इतना बुरा हाल है रोड का, इतना ज्यादा पोल्यूशन है वहां पे। तो हम इंटरनली पहले अपने आप को तो सही कर लें। हम हमेशा ग्लोबल फंड, क्लाइमेट फंड और इन फंडों की तो बात करते हैं। इन फंड को हम ले भी आते हैं, लेकिन हम उसका कर क्या रहे हैं? प्लांट लगा दिए, चल नहीं रहे हैं। 25 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इंडिया में लगे हुए हैं जो नहीं चल रहे हैं, और एक प्लांट लगभग 400 करोड़ कॉस्ट करता है। तो एक इस चीज की पहले इंटरनल एक्चुअल ऑडिट भी तो हो जाए ना। केवल मैं जाके बोल दूं मैंने, मतलब मेरी पूरी दिल्ली ओडीएफ फ्री है, ये बोलने से ओडीएफ फ्री थोड़ी ना हो गई है। तो ये चीजों को देखना बहुत जरूरी है। मैं तो बिल्कुल भी अब किसी भी फंड के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, चाहे वो क्लाइमेट फंड हो, चाहे वो दूसरा भी आप लोगों ने स्टार्ट किया था कौन सा, ये लॉस ऑफ डैमेज फंड हो। जो भी फंड्स हैं, इन सबसे पहले जो अपने आप को संभाले वो ज्यादा बेटर है। थैंक यू जी, थैंक यू खंडेलवाल जी, थैंक यू सो मच। सो बिफोर मैं, सरकार जी ने हैंड रेज किया, मैं आऊंगा सरकार जी के पास। सो मैं नीरज त्यागी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके व्यूज हैं, बिकॉज ऑलवेज उनके भी बहुत क्रिटिकल व्यूज होते हैं, वेरी टू ही स्टडी अ लॉट। सो आई विल रिक्वेस्ट नीरज जी, एंड देन आई विल कम टू आफ्टर दैट टू सरकार जी। आपका म्यूट है। हाँ जी जी, ठीक जी। नमस्ते सभी को, नमस्ते डॉक्टर अनिल कुमार जी को नमस्कार। आज जब मैं HCFI का मुझे ध्यान आया तो थोड़ी सी खांसी आ रही थी सुबह, तो बुरी तरह खांसते हुए मैं सोच रहा था, मैंने कब मीटिंग अटेंड करेंगे, तो 2 लाइन में सुनाना चाहता हूँ। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हमको COP28 से सोल्यूशन की है उम्मीद, जो नहीं जानते सोल्यूशन क्या है। तब इसी पे मैं थोड़ी सी आउटकम जो निकले हैं, वो सभी लर्नेड लोग हैं, सबको पता है क्या क्या आउटकम है। उन्होंने जो है एक जो मिटिगेशन, एडेप्टेशन एंड क्लाइमेट फाइनेंस का किया है, वो वे फॉरवर्ड किया है। और उन्होंने द पार्टी रिकॉग्नाइज that by 2030 global greenhouse gas emission must be reduced by 43% below 1990 levels to limit global warming to 1.5 degree centigrade. इसका जो टेक्स्ट आया है उसमें ये भी मेंशन किया है कि जो रोल ऑफ ट्रांजिशनल फ्यूल्स, ये बड़ा एक अजीब सी बात है कि ट्रांजिशनल फ्यूल्स, इसका मतलब हम कोयले पे तो रोक लगाएंगे लेकिन गैस पे नहीं लगाएंगे।
और गैस का यूज होता रहेगा। मेरे ख्याल से तो फॉसिल फ्यूल में तो गैस भी आनी चाहिए थी, इन्होंने सिर्फ कोयले को फोकस किया है। तो ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सी बात है कि हम पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट को लेकर चल रहे हैं और हम सिर्फ अभी कोयले पे फोकस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो गैस और ऑयल को भी फोकस करना चाहिए था। द COP28 जो डिसीजन है, these also highlights the importance of protecting and restoring nature and ecosystem and enhancing efforts to halt and reverse deforestation by 2030। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमने फॉसिल फ्यूल की बात की है। पहले इस तरह के प्रपोजल्स आते थे तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता था। पिछले 30 साल में पहली बार ये एक अचीवमेंट है कि हम फॉसिल फ्यूल पे अपना कुछ एग्रीमेंट सभी कंट्रीज ने दिया है। और जो सबसे बड़ी बात फाइनेंस की है, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड, इट वाज एग्रीमेंट वाज रीच्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द कॉन्फ्रेंस। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। द फंड विल इनिशियली बी होस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक and it has received over $700 million in pledges, including $100 million each from Germany and United Arab Emirates। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। और जो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उसको भी वेलकम किया है। और हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो दुबई की जो COP28 का जो हुआ है हमारा एग्रीमेंट, this is the beginning of the end of the fossil fuel era। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हमने जो है ना, टारगेट्स नहीं है, कोई टाइमलाइंस नहीं है, इसमें थोड़ी सी हिच है, इसमें एग्रीमेंट भी नहीं हो पाए हैं। तो इसमें अगर कॉन्क्रीट डेडलाइंस हो तो ये बहुत ज्यादा एक इफेक्टिव वे में हम इसको कर सकते थे। The outcome of the global stock take will inform the next round of nationally determined contribution due in the first quarter of 2025। Negotiations on carbon markets under Article 6 of the Paris Agreement were not concluded during COP28 and will continue next year। और नेक्स्ट बाकू में हो रही है, अजरबैजान में हो रही है। अब देखते हैं वहां क्या होगा। बहुत सारी चीजें। COP29 will take place in Baku, Azerbaijan in November 2024 and COP30 will be hosted by Brazil। Nearly every country in the world has agreed to transition away from fossil fuels। किसी भी कंट्री ने इसका प्रोटेस्ट नहीं किया। The main driver of climate change at the COP28 climate summit in Dubai, it is the first time such an agreement has been reached in 30 years। और जो टेक्स्ट है इसका, it lays the ground for transformational change। लेकिन इसमें जो फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये एक टैक्स में इंक्लूड करना चाहिए था, वो इंक्लूड नहीं किया है। एंड द टैक्स मूव डिजास्ट्रसली बैकवर्ड्स फ्रॉम ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफरिंग ए फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। And now whether this is a turning point that truly marks the beginning of the end of the fossil fuel era depends on the actions that come next and the mobilization of finance required to achieve them। Moreover, there is pretty deadly fatal flaw in the text। ये जो phasing out का COP28 is largely disappointed on all fronts। In a statement, it has not sufficiently raised climate ambition, held historical polluters accountable, or established effective mechanisms to finance climate resilience and just low carbon transition for the global south। और इसमें मुझे लगता है नॉर्थ साउथ कन्फ्लिक्ट भी हो सकती है। डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, इसको थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया है। डेवलप्ड कंट्रीज मानते नहीं है कि उनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। The operationalization of the loss and damage fund on the first day, it was really a success। It failed to hold the developed world accountable for the lack of action and ambition on some aspects, especially adaptation and loss and damage. There will be some progress, but not much on the aspects related to the 1.5 degrees Celsius ambition। It is most likely that emissions will continue and will breach the 1.5 degrees target unless the world takes quick action and allocates more capital to the climate cause।
Newer technologies like carbon capture techniques may be what saves the day. But the reliance on controversial technologies like carbon capture and storage introduces concerns about possible loopholes that could weaken the impact of this transition. और जैसा कि श्याम गुप्ता जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अपने कंफर्ट को वो कम नहीं कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज, खुशहाली के लिए, हम आम आदमी की खुशहाली के लिए क्या कर पा रहे हैं उस पर एक सोच होनी चाहिए थी। और इंडिया इसमें एक लीड रोल अदा कर सकता है क्योंकि हमारी धार्मिक स्पिरिचुअल एक संस्कृति है। साहा साहब ने बिल्कुल लोकल इश्यूज के ऊपर बहुत अच्छा सलून वॉकिंग रिफ्लेक्शन किया, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अब ऋषि थोड़ा आप म्यूट कर लें, आपकी आवाज आ रही है। हुई मुद्दत, अब मैं इसके साथ ही मैं एंड कर रहा हूँ 2 लाइन के और कवि होने के नाते ना, कि हुई मुद्दत की गालिब मर गया पर याद आता है वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता, यूं होता तो क्या होता। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू नीरज जी, एक कवि हृदय और आपके व्यूज ऑलवेज जो है बहुत अच्छे और आप दिल से बोलते हैं। थैंक यू सो मच। एंड डेफिनेटली ये इश्यूज ऐसे हैं कि एक्शंस फॉर एवरी, आई थिंक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है और आपको एक कैंपेन मोड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्टेट गवर्नमेंट्स को और कंसर्न एजेंसीज को लेना पड़ेगा फॉर एवरीबडी टू बी वेरी सेंसिटाइज एंड टू ट्रांसलेट इनटू एक्शन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट जब तक नहीं होगा तो हम ऐसे ही एक अवेयरनेस, कोई भी अवेयरनेस या कोई भी अगर एक्शन जब तक नहीं होता है उसको ग्राउंड पे, तो उसका कोई पर्पज नहीं होता। डेफिनेटली आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बाय फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to at least to take the ground level to the masses by different mode like through eco clubs in school colleges or through RWA or through citizen groups. That is important. So I'll request now Mr. Sarkar to, I mean, he has raised hand I think long time, so I'll just request him to unmute and express his views. सरकार जी पत्रकार हैं बहुत बड़े। जी जी सरकार जी, जस्ट आई थिंक आपका या श्योर। थैंक यू। मैं 2-4 छोटी चीजें करना चाहूंगा। श्योर सर, श्योर। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता है, मैं काफी इतना मुझे लगता है शायद मैं इस बारे में मेरे ज्ञान काफी कम है। ये COP28, मैं एक छोटी सी चीज से शुरुआत करते फिर दूसरी चीज पे जाता हूँ। कहती है फॉसिल फ्यूल जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो हिंदुस्तान में डीजल जो है वो पॉल्यूटेंट है, इसलिए हिंदुस्तानियों ने डीजल के कार्स को 10 साल के लिए कर दिया। कहा कि 10 साल की पुरानी जो कार होती है उससे जो है बड़ा नुकसान हो जाता है। क्या नुकसान होता है? मेरी कार के कोई 10 साल होने वाले हैं। मैं अभी 2 दिन पहले ही उसके पॉल्यूशन चेकिंग पे गया था और 0.45 जो है उसका एमिशन लेवल है। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी डीजल कार से कितना पॉल्यूशन होगा। और सारे दिल्ली में भी जितने भी डीजल कार है किसी का भी शायद ही, अगर वो रनिंग कंडीशन में है और पॉल्यूशन चेकिंग उसकी हो रही है, 1% से ज्यादा उसका एमिशन नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, अमीर लोग हैं, हिंदुस्तान जला नहीं सकता है, पर अमीर लोग जो है हिंदुस्तान में ही डीजल जो बनता है उसका एक्सपोर्ट होता है और यूरोप और यूएस में उसका इस्तेमाल होता है। तो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, वो करेंगे और हम उसका खामियाजा भुगतेंगे, क्योंकि कार वाले हमारा जो है कार 10 साल बाद जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे अगेंस्ट द राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए छोटी सी बात है, गरीब आदमी गरीब सफर करता रहता है। दूसरी चीज मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि ग्लोबल वार्मिंग की बात हम करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या वर्ल्ड में पहली बार हो रहा है? हिस्टोरिकली अगर हम देखें, जियोफिजिकली देखें, तो एटलीस्ट देयर हैज बीन 7 times when the world has warmed up। और छोड़ दीजिए 7 बार की बात छोड़ दीजिए, जो ग्रेट फ्लड हुआ था वेदर नोआ के टाइम में कह लीजिए मनु के टाइम में, तो वो क्या ह्यूमन एक्टिविटी से ही हुआ था? और क्या ह्यूमन बीइंग्स आर सो पावरफुल दे कैन चेंज द कोर्स ऑफ द नेशन? मेरा सवाल है, मुझे समझ में नहीं आता है। दूसरी चीज, ये ग्लोबल वार्मिंग और फॉसिल फ्यूल ये सारी चीजें कहां से शुरू होती है?
अगर आप देखें कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत होती है 70s में, जब ओपेक ने सारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए और उसमें एक पॉइंट उन्होंने ये कहा था कि इससे पेट्रोल का कंजम्पशन कम होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, और इससे ग्लोबल वार्मिंग, तब जस्ट कॉन्सेप्ट शुरू ही हो रहा था, उन्होंने कहा कि इससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। तो हमने देखा कि उससे ग्लोबल वार्मिंग कम तो हुआ नहीं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता ही जा रहा है और आगे भी शायद और बढ़ता रहे। तो सवाल ये है कि मुझे जहां तक ये लगता है कि ये जो G7 की एक कॉन्स्पिरेसी है कि जो छोटे मुल्क हैं, जो डेवलपिंग मुल्क हैं, जिसमें हिंदुस्तान शामिल है, हिंदुस्तान अपने आप को जितनी भी ट्रिलियन की इकोनॉमी बता ली, हिंदुस्तान एक गरीब देश है। यहाँ के लोगों के पास आज भी 2 जून खाने का नहीं है, इसलिए सरकार को हिंदुस्तान के 3/4 से ज्यादा लोगों के लिए खाने का इंतजाम फ्री में करना पड़ता है। और ऐसे उसमें अगर हम कहें कि हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक लेंगे, COP28 कहां तक सही है मुझे नहीं समझ में आता है। दूसरी चीज, प्लांटेशन अगर हमें करना है, हम उत्तराखंड को तबाह करेंगे, हिमाचल को तबाह करेंगे, पूरी लद्दाख से लेके नॉर्थ ईस्ट के हिमालयस को तबाह करेंगे, और पेड़ कहाँ लगाएंगे? वहां से पेड़ काटेंगे और बुंदेलखंड में हम लगा देंगे। मुझे नहीं समझ में आता है कि अगर वहां से हमने पेड़ काटे और बुंदेलखंड में लगाए तो हिमालय कैसे उससे बचता है? तो मेरी समझ काफी कमजोर है। पर ये मैं इसके साथ साथ ये भी देखता हूं कि जो ग्लोबल G7 जो है, जो MNCs के अंडर में है, आ गया है आजकल, G20 हिंदुस्तान जो उसका हिस्सा है, वहां भी हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो तो कोयले पर पता नहीं क्या क्या कर रही है। कोयले ऑस्ट्रेलिया से खरीदती है, क्यों खरीदती है नहीं पता मुझे, हिंदुस्तान में आके उसको 10 गुना दाम में बेचती है और अंडर वॉइसिंग करती है और तरह तरह की गड़बड़ियां करती है। और ये बातें हम करते हैं तो लोग कहेंगे आप तो पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। तो COP28 मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरी पूरी पॉलिटिकल चीज है, MNCs के फायदा कराने के लिए चीज है, बड़े बड़े मुल्कों के फायदा कराने के और बड़ी बड़ी कंपनियों के फायदे कराने के लिए चीज है। और COP28 हो या COP एनी नंबर हो, मेरे ख्याल में वर्ल्ड पॉपुलेशन को दे शुड डंप दिस COP28, दे मस्ट नॉट बी गाइडेड बाय दिस COP28। ये सारा जो है धोखाधड़ी है, कॉन्स्पिरेसी है टू लूट द पुअर पीपल and enrich the richer. And I believe this is one of the worst studies and worst COP28 that has happened in Dubai. Why should we give a fossil fuel? हम कंडा जलाएंगे उसमें भी परेशानी है, हम लकड़ी जलाएंगे उसमें परेशानी है, हम डीजल का इस्तेमाल करेंगे उसमें परेशानी है, हम पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे उसमें परेशानी है। कहेंगे बैटरी का इस्तेमाल क्यों? इज बैटरी नॉट ए पॉल्यूटेंट? लिथियम आयन की जो माइनिंग होती है, व्हाट इज द प्रोसेस? कितना पानी बर्बाद होता है उसमें, कितने मिनरल्स बर्बाद होते हैं? एंड देन व्हाट अबाउट द बैटरी? बैटरी का डिस्पोजल का कोई सिस्टम नहीं है। बैटरी इटसेल्फ इज द वर्स्ट पॉल्यूटेंट एंड वर्स्ट हीटिंग एजेंसी। और हम कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी चीज है। क्यों अच्छी चीज है? क्योंकि जो MNCs जो बैटरी बनाते हैं वो सारे बाहर हैं, उनको फायदा होगा, हमें नुकसान होगा। हम हर तरह से अपनी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और उनसे इंपोर्ट करके हमें वो चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो आज जो हमारा मुल्क जो है जिस इन्फ्लेशनरी दौर से गुजर रहा है, उसके लिए इस तरह के आई वुड से वेरी अनवाइज पॉलिसीज जो है जिम्मेवार है। वी मस्ट गेट आउट ऑफ दिस COP28। इंडिया मस्ट से एंड इंडियन गवर्नमेंट मस्ट से, पर अनफॉर्चुनेटली इंडियन गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं कम आज MNCs के दबाव में है। और India must say that we won't agree to any COP rules, any COP policies. We must get out of it, and we should develop ourselves independently, freely, because we are a free citizen. We have it right to accept and use whatever fuel we want. If we can't use that fuel, that means we are not a free country, we're not a free individual. So COP28 मैं समझता हूं वर्ल्ड की जनता के साथ सबसे बड़ी धोखाधड़ी है, और हमें और हिंदुस्तान को इसमें आगे आना चाहिए
और इससे अलग होके हिंदुस्तान को, वर्ल्ड को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग अगर हो रही है तो कोई बचा नहीं सकता है। मनु नहीं बचा सके, नूह नहीं बचा सके, कोई नहीं बचा सका। 7 बार वर्ल्ड में वार्मिंग फेज आ चुका है और कूलिंग फेज भी आया हुआ है। द नेक्स्ट इज कमिंग सून। So who are we trying to be fool? Sorry, thank you. Thank you. Very, very, your, I mean, I can say eye-opening views. Definitely, हर एक के view होते हैं. Maybe some country may be thinking about their own vested interests. I mean, but reality is, I mean, this. So thank you so much for your views. Thank you, Sarkarji. Now, I am request Ruchika madam. So at least we have just less than 10 minutes. So I'll just request Ruchika madam to, I mean, in brief, she can, I mean, that's whatever the views she can express. Ruchika madam, you there? Now I'll request, I think, because I started with Dwarkanath sir, and I'll request his the final views on the particularly. If you can unmute, sir, Dwarka sir. Concluding, at least you have listened to, I mean, all the speakers today, and because maybe some opposite views, I mean, from one each other, maybe their individual views, but definitely you can sum up and their concluding point of view. See, there is no doubt that historically and also presently there is a bias towards the developing countries and the third world countries, and nobody is talking of environmental impact of war, because neither Asian countries nor African countries, we never plan for a war because we can't afford it. Russia had, and then Kuwait invasion we have seen. Nobody talks of environmental impact assessment or the harmful effects of war. Now Ukraine, Russia is happening. Now Israel, Hamas is happening. So what cannot be stopped by the Western countries, they will never stop. But at the same time, we should be positive and we should be optimistic. Whatever I can do it, let me do it. इसका छोटा से एग्जाम्पल देता हूं भाई. When we all brought up our children, we always tell them and show them good examples rather than giving them a bad example as precedents. अगर जो country नहीं कर रहा है, let them not do it. It is for the mankind and for the global goodness and also my own personal and professional satisfaction. I can do whatever little bit I should do it. The question comes affordability. जितना कर पाऊंगा उतना ही करेंगे. It is not that if global finances are extended to that extent, we can always do it. And we should not forget one basic fundamental thing. Neeraj Tyagi is an engineer, so he will appreciate what I am telling. Any conservative effort or effort towards sustainability, personal finances, or our company's finances. जब निकाल के CFS में एमिशन कम हो जाएगा, भाई मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी तो कम हुआ है. At the same time, then the next technology came, LED has come. Now all of us have shifted to LED. It is not only because of the fact that global emission is going to come down, but it is having an underlying principle of energy conservation and saving of our own resources.
whether it is institutional or individual resources. So let us be optimistic. I would like to end this meeting in an optimistic note, that we should all look forward to have the optimism. And then, of course, with the phase of development, there will be always demand and supply gap. How much is needed, what is needed, who has to do it, all these questions will always be there. It was there earlier, it is now, and after 30 years also it will be there. बट उसके लिए हम टेक्नोलॉजी डेवलप करना जरूरी है, आगे बढ़ना भी जरूरी है, and we should take good examples as presidents, not a bad ones. Thank you. I like to say something, Dr. Anil. Sorry, I invited you earlier. My... I think I invited you. Just speak until 2 minutes. Yeah, definitely. Ji. So I agree with all the speakers, and I think Shyamji and Neeraj and Dr. Saha, everybody, on the point, whatever needs to be said. Actually, what I like to also just say is that, I mean, we as a nation have always been led by dharam, gyan and karam. So dharam and gyan sab ab hai, but the karam, which is, actioning your concern into actual actionables, that right now the tawajjuh is being given to the, is being placed on the public through these government campaigns, also Mission Life and all. But I think somewhere what needs to be done is that the action is requested even from the government. As a citizens group, what we are seeing is कि हम violations note करते हैं, चीजें करना चाह रहे हैं, भागीदारी अपनी बढ़ा रहे हैं, और हमारे समूह में बहुत ऐसे लोग हैं जो अवेयर हैं, नॉलेज आ गई है, उसको वो सही करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन. लेकिन सबसे बड़ा अभी जो एक बॉटलनेक है वो है गवर्नेंस मॉडल. सो जैसे अभी साहा जी ने बोला या डॉक्टर श्याम ने बोला कि we have to think to be globally committed to on a global platform. We need to first fix what is local. So local में जो local citizens हैं और जो local persistent factors हैं, जो एक immediate environment and then the immediate atmosphere को जो impact कर रहे हैं, I think the picture speaks 1,000 words, and the words are right now ringing hollow. The picture is very stark. The daily धूल धुआं की जो कहानी है, जिसको हम लोग को एक तरीके से अपने आप को डिसेंसिटाइज भी करना है कि भाई हिंदुस्तान है, ये है, यहाँ पे धूल रहेगा, कूड़ा जलेगा. But this is something that we must have a zero tolerance towards. The enforcement capacities कहाँ से आएंगी? जहां तक मुझे समझ आ रहा है, ज्यादा लोग इसके बारे में जिक्र करेंगे, ज्यादा लोग कंप्लेंट करेंगे, so maybe administration will feel empowered enough to be sakhat on the polluters. But definitely black carbon black as it is called, and the fine particulate matter जो रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन हर इंसान को जो एक बहुत ही डीप तरीके से जाके इम्पैक्ट कर रहा है, और उसका अभी एक शायद हम सब अभी समझ नहीं पाए कि ये जो PM 2.5 जो घुल मिल रहा है हमारे रक्त में, वो क्या रंग लाएगा. वो जैसे सब डॉक्टर्स हैं वो कह ही रहे हैं कि 10 साल में आने वाले समय में वो सब हम देख पाएंगे. But the only good part is that these problems, at least the local persistent factors, are related with the current lack of enforcement of our policies and rules. Laws hain, rules hain. It just requires the plugging of, bridging this gap by strict implementation. And अगर हम एक पब्लिक के ऊपर अगर हम एक जोर डाल रहे हैं कि आप अपनी दिनचर्या को एक इको फ्रेंडली तरीके से आप उसको अपनाइए, then from the administration and the government point of view, we need to empower the common man. And by this, I'll end with an example. अगर एक मिसाल के तौर से COP28 में अगर एक धारणाएं, अच्छी धारणाएं देनी थी कि यहाँ पे एक मुल्क है जो
गरीब भी है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच भी है, उसको बहुत धार्मिक भी है, ज्ञान भी है और कर्म भी है। तो उनको क्या करना चाहिए था? मिटिगेशन एंड अडॉप्टेशन कैसे उनको अगर दिखलानी चाहिए थी, वो एक जीरो वेस्ट सोसाइटी या म्यूनिसिपैलिटी के पास जाते और वहां पे लाइव डेमोन्स्ट्रेट करते कि देखिए जो आपके प्रतिदिन जो आप जैसे जो चीजें खरीद रहे हैं, ये किनारे की दुकानें हैं, डायरेक्ट आप अपना थैला ले जाइए, उसमें से आप अपना राशन पानी आप लाइए, उसको जो आपका जो जनरेट हो रहा है उसको आप बायोगैस या बायो सीएनजी या होम कंपोस्टिंग के तौर से आप कर सकते हैं। पत्ते जो हैं आप उसको जलाए ना, ब्रिकेट, अल्टीमेटली एनीथिंग दैट यू विल मेक, these are the cooling technologies by doing mulching or by doing its processing as composting. और बाकी जो मतलब so you know we had that opportunity of showing, and just now the more we show that we can create a reusable culture, which to my mind is a single you know goal, if and a vision, if all of us can actually even pressurize the manufacturing industry and the commerce to design and develop reusable and refillable systems and create the logistics and the patterns of delivery of that, चाहे वो आपका साबुन, तेल, राशन जो भी है वो भी आपको अवेलेबल है। आप अपनी कंपनी का काम भी चलाइए, लोगों को आप एक सहूलियत भी दीजिए, जैसे मदर डेयरी ने आज से 30 साल पहले करा था, या Coke and other beverage companies used to give you in the glass bottles. So I think we just need to go back a little bit in time, but do it in with the use of better mechanisms and empower the people. And definitely look at bringing in the 34th Amendment to the Constitution, which is empowering the local municipalities so that local governance can be held accountable for all of this. Otherwise, centralized solutions like WTE and all of that will continue being, thopoed on the public, and we will be able to do little much despite segregating our waste and still it going for mixed incineration. Thank you very much. Thank you, Rishika Madam. Thank you. Definitely. I think in future we are planning to go for some session on the success story. Anybody, have a kind of this kind of very success story for the which is can role model for the others that we can take up in the some future sessions of the HCFI. So definitely, I'll request you all members, if you have anybody and this success story, we can go for that, and we can make some small presentations. So for others too, it will be motivating for others. So we'll take up this kind of success story. So thank you all the speakers today. We have discussed. Thank you, my friend and colleague, Dr. Dwarkanath sir, and Shyam Gupta ji, Dr. Saha, Pradeep Khandelwal ji, Neeraj Tyagi ji, Mr. Sarkar, Rishika Madam, or all others who joined, and all the viewers from the Dr. KK Facebook, YouTube page, and everybody on behalf of Dr. KK, HCFI, Hardcare Foundation of India, I thank you all the speakers and viewers. Definitely will continue the legacy of Dr. KK Aggarwal with your support. So thank you. We'll end with this. I'll end this.